Hi guys, this is Dhananjay here and I'm the CEO of Moksh. This is going to be a 30 minutes interactive session. All of you can see one button on the panel. You can ask me questions whenever you want on that panel, okay? And I'll be able to read them and I'll be able to answer them, okay? So let's see, this is a very short and crispy presentation. It's all about your career. Many of you are from bachelors. They have already passed out bachelor and looking for masters. What do I do in life? What is my career? How do I get skilled? How do I get jobs? And all those questions in your mind. Many of you are in 12th standard and still thinking, you know, कि क्या बनूं मैं सर, साइंस में जाऊं, आर्ट्स में हूं मैं, आगे जाके क्या करूंगा, कॉमर्स में हूं सर, what are the right lines and all. So guys, this 30 minutes, what I'm going to do is, I'm going to ensure that your mind opens up. We'll talk and try to make it as interactive as possible. Okay? Let me tell you what is Moksh. Moksh is the largest career counseling company in India, having presence in more than 30 cities in India. It's a public limited company whose shares are listed on National Stock Exchange. This is the only company in the country which has reached the stage of, you know, becoming a public limited where the shares are owned by the public. And I'm the CEO and I handle the career counseling myself since last 11 years now. Okay. Let me tell you how can we help you to create global careers for Indians. Okay, so what we are going to do is, I have divided it into 5 parts. Okay, study in India का क्या roadmap होता है बच्चों का, कैसे, how can you plan your career, what happens if you go to Europe or US or Canada or XYZ country, and how do you take a call and execute your plan. That's the 5th part. Okay, so this is a very short and crisp presentation. Many of you will be already in 12th and many of you must be, you know, in bachelors, so this is applicable to all of you. Okay, if you are in 12th, you need to take a decision whether I want to do graduation in which area, which college, in India or abroad, or do I study from right now from in the foreign country. I will tell you, remember one thing, it costs you the same amount whether you study in India and get employed, and it costs you the same amount if you study in Europe and get employed there. This is the theme of the entire thing, and we have placed thousands of students and made careers for them. The people who have dreams to do something in their life, it's not only about going abroad. What is the difference if you go abroad, and what is the difference if you study in India? How does it change your life? And what is the cost and what are the decision-making factors? That is what you need to now start off. So Moksh has basically 2 divisions. One is a career counseling and placement. Okay. So we place students for bachelors, for masters, and for doctoral programs. Okay, it's basically called student recruitment brand. Second is Moksh Academy. So there are apps. So there is an app called Moksh Career Planner app. Okay, you can go through the download the app on Android at the moment, and you can go through all your options for various streams like medical, like engineering, like finance, like business, like economics, like hospitality, like, and you can think of any country that you choose to study in. You will definitely find a solution over there. Moksh Academy is another app which is basically online coaching for various exams if they are needed for you to study abroad. Okay, so these are the 2 solutions that are available on Android at the moment, and Apple version will be there after, you know, 1.5 months. So guys, let's understand what are the courses and what is the current stage in India
For example, okay, Altaf, I'll speak in English, don't worry. If you see the roles, different roles for people, okay, and if you see the employability percentage of these roles in India, that's abysmally low. So what happens is, now the world is changing. The world doesn't look only for the degrees, they are also looking for the skills that you have developed. Acha, okay, Altaf, you want me to speak? So everybody must understand the major difference between India and abroad is the speed at which you create your career by earning money. Most of the students जो foreign जाते हैं, they are not going there to study. They are basically going there to immigrate for a better life, for a faster money earning, and for the quality of life that they get at the end of the day. The employment availability in European countries is far more. वहां पे काम जल्दी मिलता है, ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, और वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो यूनिवर्सिटीज है, जो रैंकिंग है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमसे थोड़ा सा डेवलप्ड है. इंडिया में भी अभी धीरे धीरे you are seeing some large universities coming up, but it will take some more time for India to match with the standards. But earning, it will take much more time because of the major difference is €1 is 90 rupees. और उसको मैच करना अभी बहुत मुश्किल होता है. इंडिया के अंदर if you start a job as an engineer, the average salary is 25 to 35 के बीच में maximum. That also from if you are from a reputed college from where you have done the campus interview on वो सब. अगर आपने वो मिस कर दिया, if you have missed the opportunity to get employed within the campus interviews, then even the salaries are lesser than that. So these campus interviews happen majorly. So the problem is with the freshers. Correct है? एक सवाल पूछता हूँ मैं आप लोगों को. The poll will be published on your panel. You just need to click on the right thing and will come to me. Which stream are you all from? So here you are. I'm sharing the results with you. Hundreds of students are listening to me. Out of that, 85% of the students are from science. Around 8% are from engineering and balance are from commerce. So guys, the research doesn't happen much in India. The R&D budget of the companies is very less, and that for science students, that's a huge problem. If you have BSc IT as the degree, still there are some scope for you to get some more skills, get into some special courses on AI, ML, additional करते जाना पड़ेगा. Normally, a person is considered to be employable after post-graduation in India. After graduation, the employment ratios are so abysmally low, or if you get a job, the salary scales are so low that you really are, that is why you see the frustration in the young people at the moment. Correct? So this is the basic problem for which there is a brain drain from India to abroad. इसी के against में, if you see, average salary of a finance manager in different countries, and you become a manager within 5 years, maximum 5 years of experience. If you have done your graduation, so let's say a BCom वाले ने इंडिया में जर्नी चालू किया, CA का एग्जाम दिया, कोशिश किया, 94% फेल होते हैं. वो क्या करते हैं, फिर टैली सीखते हैं, अलग अलग स्किल्स जमा करते हैं,
या तो बिजनेस या तो MBA में जाते हैं, they tend to spend another 8 to 15 lakh rupees for the MBA in India, and then they become employable. Otherwise, if I try to find a job only with a BCom degree, you as well as I know what is the salary that you get. You will not earn more than 2 lakh rupees a year. यहाँ पे these countries, let's say Germany, within 5 years your salary is rising. It starts from 36,000, that's a bare minimum you start from, and it rises to 55,000. That's an average salary of any student who has settled down in Germany, which works to almost 50 lakh rupees. So almost 30 times 20 times fast आप grow कर लेते हो लाइफ में, और उसका फायदा क्या होता है? What is the purpose of, what is the advantage of that? लाइफ में अगर मैं 23 साल से मेरी जर्नी शुरू कर रहा हूँ या 21 साल से जर्नी शुरू कर रहा हूँ, मैं जो चीज मैं 30 साल में कर लेता हूँ वो इंडिया में मेरे को पहुंचते पहुंचते 40 से 50 साल के बीच में मेरा एज हो जाता है. What am I losing is the time. There is no, that's priceless. So what I can do in 8-9 years, I do not want to do in 20-30 years. What am I saving is 10 to 20 years of my life. अगर मेरे को ये लाइफ एक्स्ट्रा मिल गई, I can do wonders. Correct है? So guys, any job that you take, the salaries in Europe are going to be fantastic, and because of the low population, you know, Europe में population नीचे गिरते जा रहा है. They need lot and lot of, for example, एक nurse देख लेंगे तो स्वीडन की गवर्नमेंट ने बोला मुझे 45,000 नर्सेस चाहिए. अगर और कोई आप AIML का देखोगे तो जर्मनी के अंदर they have come out with almost 11,000 engineers who are required over there for this job alone. Every year there is a flow of almost 20,000 students to Germany. Can you believe it? And if you can, अगर आपने अपना बैचलर का खर्चा प्लस मास्टर्स का खर्चा इंडिया में किया, और अगर आप यही कोर्स आप यूरोप में करते हो, cost will be same, time will be same, but earning will be very different. So if you plan your career properly, you have tremendous amount of opportunity to change the path in your career right from the beginning. ठीक है? होता क्या है? I'll tell you. आपके पास 3 प्लान होने चाहिए करियर के, या इंडिया में करूंगा, या यूरोप में करूंगा, या फिर जहां बच्चे लोग जाते हैं यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए. ये 3 अलग अलग सेगमेंट है. These are 3 completely different segments, remember that. Okay, so guys, if you are in top institution, there is absolutely no problem to get a job. But to get inside that top institution, the chances to get admission, there is nobody who will go at the bachelor level if I'm getting an admission into premier institutions of India. Correct? But huge competition in entrance exam does not allow everybody to get into these institutions, and ultimately you tend to get frustrated. Ki, I have the passion, I want to do something better. I'm good at my job, in my learning. I may not be as good as the top 2% of the country. That doesn't mean I do not deserve a better life. What do? Jump to the plan B. I have budget constraints, no problem. We have solutions. If you have lot of money, these are the countries where you can think of. But remember, UK do not have now jobs available. आपको Google करना पड़ेगा. Canada has huge accommodation problem. अगर आप believe ना करते हो, तो Canada का drop हो गया है complete because of this. I'll do Google for you, okay? So that you start searching for things in the right manner. Research करना बहुत जरूरी है.
housing has become one of the biggest problem for the student. Increase in international students and migrants, which has increased demand for homes. Now you are not finding their houses, and the cost has almost become 1.5 times to live, and jobs are going down because of the huge competition among the international students there. So it is slowly, also if you see, that is the reason why the visa rejection ratio of Canada is now going up and up every year, and that is why drop in Indian students going to Canada in 2023. 86% डिक्लाइन, मतलब पहले 100 जाते थे अगर, तो अभी सिर्फ 14 जा रहे हैं. 86 people have chosen another destination. So सबको लगता है मेरा फ्रेंड कनाडा गया, मेरा दोस्त यूके गया, मेरा ये गया वो गया, but remember one thing, they will not tell you the fact, they will not tell you the problems they are facing. You will only see them on the Instagram having, enjoying the parties, going for the drinking, going out with the friends, roaming around in the country, but actual purpose जो था उनका वो था study, work and settle down. Do not want to come back to India. This doesn't work now in English speaking countries as it was before. So UK has gone, Canada has gone, Australia का visa reduction हो गया completely, and USA का visa rejection हो गया है. So ये सब अगर आप research करोगे तो आप नॉर्मल छोटे मोटे एजेंट के पास जाओगे, सर मेरे को ड्रीम है कि मैं फॉरेन जाके पढूं, वो पहला सवाल पूछेगा कितना पैसा है, बजट कितना है, 40 lakhs है. आई होप यू अंडरस्टूड नाउ. है तो तुमको पटाएगा, बहुत अच्छा पिक्चर दिखाएगा और भेज देगा. प्लीज डू नॉट बिलीव दीस थिंग्स. डू नॉट स्पेंड मोर टू स्टडी अब्रॉड, गेट योर एक्सपीरियंस, गेट योर ग्लोबल हाई क्वालिटी एजुकेशन. कॉस्ट इतना ही रखना चाहिए और ऑप्शंस अपने आपके ग्लोबली खुल जाने चाहिए. अगर ये सॉल्यूशन मिल जाता है तो देयर इज नथिंग लाइक इट, एंड यू हैव लॉट ऑफ. कंपेयर अगर करोगे आप English speaking countries, high cost because education is now commercialized, visa rejection, and as I told you, starting budget is 40 lakhs, visa and employment is a hassle, 100% is paid by the student. यही आप यूरोप के शेंगन कंट्रीज देखोगे, इसमें हाईली सब्सिडाइज्ड हायर एजुकेशन मिलेगा. इटली में फुल स्पॉन्सरशिप मिल सकता है आपको. यूरोप के अंदर लात्विया, हंगेरी, लिथुआनिया, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ शेंगन कंट्रीज. कोई भी एक कंट्री में गए तो आप पूरे 27 कंट्रीज में घूम सकते हो. You don't need a separate visa for getting into another country. So it's like India. इंडिया का तमिलनाडु में घुसे तो आप कर्नाटक में घुसने को दूसरा ये नहीं पूछते कोई डॉक्यूमेंट. सिमिलरली यू कैन गो फ्रॉम फ्रांस, अगर आप फ्रांस में रहते हो, वहां पे पढ़ाई कर रहे हो, यू कैन वर्क. इट्स अ कॉमन एरिया है. यू कैन स्टडी, यू कैन वर्क, यू कैन डू एवरीथिंग in any of the 27 countries. You can travel, you can settle down, सब कुछ कर सकते हो एक कंट्री से. अगर आप पास आउट हो उस कंट्री में तो यू कैन वर्क इन एनी अदर कंट्री इन दैट बिकॉज ऑफ डिग्री. इंडिया में लो क्वालिटी एजुकेशन है. आप बैचलर करोगे या कर लिए हो तो मास्टर करने जाओगे, स्टेप बहुत स्लो है. बजट्स अच्छे इंस्टीट्यूट, अगर आप कंपेयर करोगे अच्छे इंस्टीट्यूट का और वहां का टॉप इंस्टीट्यूट का, तो सेम बजट में आप पढ़ाई कर सकते हो. इंडिया में ऑफ कोर्स वीजा का जरूरत नहीं है. यहाँ पे 95% गारंटी है. यहाँ पे सब्सिडाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है. यहाँ पे पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के टाइम पे होती है. वहां पे आपको फ्लेक्सिबल सिस्टम दिया जाता है. दे मेक यू, इंडस्ट्री के प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे. इंडस्ट्री को जैसा करिकुलम चाहिए वैसा करिकुलम आपको एम्प्लॉयबल बनाता है. इंडिया में मास्टर्स लेवल पे आप एम्प्लॉयबिलिटी करते हो. यहाँ पे डीप एजुकेशन सिस्टम कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री है. यहाँ पे ब्रॉड एजुकेशन सिस्टम है. इट ओपन्स अप योर माइंड. जॉब ऑप्शंस और वीजा ऑप्शंस प्रॉब्लम है.
बट डेफिनेटली अगर वर्ल्ड रैंकिंग में जाओगे तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैज मोर यूनिवर्सिटीज। इंडिया के अंदर से आज की तारीख में 18% बैचलर के लेवल पे जाते हैं और 72% मास्टर्स लेवल पे जाते हैं। ये बैचलर लेवल पे जाने वाले लोग 4% मेडिसिन, 1% आर्ट्स वाले, 3% कॉमर्स। इसका पूरा आपको इसके ऊपर से मिल जाएगा रिपोर्ट व्हेन यू वांट टू गो, एंड फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट जारी किया है, उसी के ऊपर से ये फिगर्स आए हैं। सो ऑल आई कैन टेल यू इज, अगर आपको करियर बनानी है, एक ट्विस्ट लेके आना है, एक स्टेरॉइड देना है लाइफ को, व्हाट्सएप कर दो, करियर प्लानर ऐप डाउनलोड कर लो, या तो वेबसाइट पे चले जाओ। सिंपल सॉल्यूशन है। दे विल, द करियर असिस्टेंट्स विल गिव यू फ्री सपोर्ट कंप्लीटली टिल यू टेक अ डिसीजन। ये आपके सामने है, देख लो। दिस इज व्हाट योर प्लान लुक्स लाइक। अगर आप 12th के बाद में स्टडी इन इंडिया कर चुके हो या करने वाले हो, ये पेरेंट्स को समझाने वाली बात है बैचलर्स के लिए। मुझे मेरी करियर को प्लान करके अच्छी तरह सेटल करना है, मुझे लोअर सैलरी पे इंडिया में सेटल नहीं होना। यूरोप का सबसे प्लस पॉइंट बड़ा क्या है? परमानेंट रेसिडेंसी इज गारंटीड। इफ आई डू 3 years of bachelor there plus 2 years of masters there, I get permanent residency। ब्लू कार्ड बोलते हैं, जैसे यूएस का ग्रीन कार्ड बहुत फेमस है, यूरोप में ब्लू कार्ड होता है। So you automatically become eligible क्योंकि आपने 5 साल कंटिन्यूअसली वहां पे निकाले हैं। Earn for 5 years more and return back to India to start your own business। उतना पैसा कमा लोगे, शांति से फ्लेक्सिबल, अपने जिंदगी के आप खुद ओनर बनो। यहाँ पे लोग सैलरी पे जाके स्ट्रगल करके फायदा नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में स्पेंड अ लॉट, योर पीआर इज सब्जेक्ट टू जॉब, एल्स रिटर्न बैक टू इंडिया। जो यूके से और कनाडा से आज की तारीख में मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर रिटर्निंग बैक। इंडिया में क्या करोगे? बैचलर करोगे, वापस उसके बाद में अनएम्प्लॉयड रहोगे, वापस पैसा खर्चा करोगे एमबीए करने के लिए, और फिर 20-25-30 हजार रुपए का सैलरी लेके इंडिया में सेटल हो महीने का। गाइस, समझ में आ रहा है? ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग चीज है मेरे करियर के लिए? Here you are. 57%, half of your, more than half of your student actually, अगर 100 बच्चे हैं अभी यहाँ पे सुनने वाले, तो 50 को बाहर भाग जाना। शॉर्टकट, फटाफट। 36 बोल रहे हैं सर सोचूंगा, मे बी, और 7% बोल रहे हैं सर नहीं जाना, इंडिया प्यारा है। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। You can have your own choice, apply your mind, talk to the counselors and ensure that अगर इंडिया में भी पढ़ रहे हो तो यूरोप में पढ़ने का सारे चीजों को जानकारी ले लो। वहां पे आपको स्पोर्ट्स में आगे आना है, देयर इज अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। आपको म्यूजिक में आगे आना है, वहां पे म्यूजिक यूनिवर्सिटी है। आपको लेट्स से शेफ बनना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं? स्विट्जरलैंड, इटली, करेक्ट। लो कॉस्ट में पढ़ो। आपको बिजनेस प्रोग्राम में जाना है, मैं थोड़ा खर्चा कर सकता हूँ तो मैं फ्रांस चला जाऊंगा। मैं इंडिया की ही कॉस्ट पे पढ़ना चाहता हूँ तो मैं लिथुआनिया चला जाऊंगा। मैं साउंड इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, मैं हंगेरी चला जाऊंगा। आप छोटे छोटे चीजों में एक्सपर्ट बनो। यूरोप से आप एक्सपर्ट्स बन के आओगे कोई एक पर्टिकुलर पैशन में। आप लाइफ टाइम वो करोगे जो विच यू विल एंजॉय डूइंग। You will not do what the job is offering it to you, because that is what happens in India.
यहाँ पे लोग वही करते हैं जिसमें उनको हैप्पीनेस मिलती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ऑफर यू द कोर्सेज व्हिच आर डिजाइन्ड बाय द इंडस्ट्री, degrees which will make you employable and allow you to earn, options which will give you global exposures, क्योंकि एक कंट्री में जाते हो 27 कंट्री में काम कर सकते हो यूरोप के अंदर, क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी वेरी हाई इन कंपैरिजन विद इंडिया। सो अगर आपको रियली कुछ करना है अपने लाइफ में तो डेफिनेटली दीज आर द बेनिफिट्स, अफोर्डेबल डेस्टिनेशन, कोई एंट्रेंस एग्जाम की मेजर जरूरत नहीं पड़ती है, कोई कंट्री में पड़ती है कहाँ पे यू डोंट नीड इवन दैट, पेड इंटर्नशिप्स, पार्ट टाइम वर्क, लिविंग कॉस्ट पार्ट टाइम में ही सारे इंडियंस निकाल लेते हैं, 20 hours per week is what you do, part time work, different types of work are available, everybody gets a job, initial language सीख के जाना है थोड़ा A1 A2 level sufficient है to get a part time job। शेंगेन वीजा का मैंने बताया 95% गारंटी है, और एरास्मस मोबिलिटी मतलब आपको पूरे यूरोप में, समझो मैं लातविया में पढ़ रहा हूँ, मुझे अभी जर्मनी में पढ़ना है एक सेमेस्टर के लिए, this university will send you to Germany, you can study for another semester in Germany, फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे को और एक सेमेस्टर करना है फ्रांस में, this is called Erasmus plus mobility, so you are mobile among the European countries। I hope you understood। जैसे इंडिया में ट्रांसफर होते हो वैसे वहां पे कंट्री के कंट्री डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ाई कर सकते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जर्मनी जाते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जॉब की अवेलेबिलिटी बहुत हाई है, इंजीनियरिंग एंड बिजनेस प्रोग्राम्स आर नोन इन फ्रांस, एंड क्या बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी, दैट इज अ स्किल बेस्ड प्रोग्राम, उसके लिए जाते हैं। स्विट्जरलैंड मेजरली शेफ और हॉस्पिटैलिटी, दुनिया के बड़े बड़े जो चेन्स हैं उसमें सारे स्विट्जरलैंड वाले आउटफिट्स हैं। इटली लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर्स यू स्कॉलरशिप, लातविया, लिथुआनिया एंड हंगेरी ऑल थ्री ऑफर यू द कॉस्ट, इंडिया की कॉस्ट से शायद कम में आप इंजीनियरिंग का बैचलर एंड मास्टर्स एंड डॉक्टरेट कर सकते हो। स्पेन majorly into business programs, jobs are available in a lesser amount as compared to any other country। Poland same cost as India। ये जो कंट्रीज हैं 9 कंट्रीज, इसमें कहाँ पे भी आपको कोई भी चीज पढ़नी हो, छोटे से छोटा स्पेशलाइजेशन, बैचलर मास्टर्स, इंडिया की कॉस्ट, बजट आपको हमारा करियर असिस्टेंट आपको बना के दे देगा। दिस इज द यूनिवर्सिटी where you can go and get the benefits like high standard of living, high quality of education, degrees and research approved and acclaimed everywhere, all programs will be English taught, extremely low tuition fee to match Indians, career growth I told you, you'll save a lot of time, आप एक्सपोज होंगे completely, globally exposed आदमी का कॉन्फिडेंस बहुत अलग होता है, और इंडिया में एक कुएं के अंदर मेंढक की तरह पढ़ाई करने वाला एक बंदे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट। या धैर्य भानुशाली, we can, you will have to, today is not a session because almost half an hour is over, so but you can definitely get in touch with the career counselors, they will definitely help you, you can study in Europe without any problem, we will help you do career counseling, we will help you select and guide for the university selection, we will help you apply, we'll help you get your tickets, visas, accommodation over there, once you reach there all support system across Europe will be made available, whichever country you want to get into, whichever program that you want to get into, this is one number, you just need to send a WhatsApp the area, that's it, I need support, can you help me to study in Europe at the cost of India, that's all, is one message will change your life। I hope you got the point now, everybody। Now if you have any more questions you can ask me, these are the career assistants which are available for you, they will give you free support to start off the entire process। If you have any questions
You can ask me. Altaf, pilot. Of course, there are so many programs about pilots, about aeronautical engineering, about maintenance, about railways, about you talk about a program which will be made available to you. किसको क्या बनना है बस वो डिसाइड कर लो. और मेरा बजट इंडिया में मेरा पैसे इंडिया जितना ही है सर, मेरा करियर बना के दो. That's all. Lucky Patil, see, every university will have different eligibility. If you download Career Planner app on Android, you will find eligibility of every university for every program in different countries. Archie Soni wants to do masters in data science. Definitely, Germany is one of the key areas. It provides you special programs like for data science. France is another one, but these two countries are not going to be as cheap as other countries. But they are all worth because you can sit down there, Archie. And secondly, there is something called technology management program. It's the latest trend right now. Is not only so if you want to upgrade in your career, okay, then to a management level, to a managerial level, to become a team leader or a product manager, okay, then degrees like technology management programs are very much popular right now in Germany. Hotel management, Rupali, either you should choose Italy with full scholarship, or you can go for, if you have a lot of money, then you can go for Switzerland. The living cost and the cost of program will be high, but the return on investment from Switzerland is going to be nobody can match that. You'll be placed into topmost job options. It has got options of internship during your program. It has got options of part-time working. It has got, you can earn paid internships are there. You can do a lot of stuff in hotel management. Okay, Rupali. No, Rituja, there is no necessity of JEE. JEE is for India, not for abroad. Okay. बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा? अल्ताफ यार आप बात कर लो ना काउंसलर से. रूपाली साल्वी, BSc CS. Definitely there are so many programs, Rupali. So you will have to talk to the counselors. There are so many counselors. There is a dedicated division for taking care of study in Europe. They will find out the right course, right university, and ensure that your entire process till you reach and after you reach is taken care. So you don't have to worry about it. You specify your dream. Saptesh Nagpure, which site is best for 12th science using less money? I didn't get your question. Site means what? No, Anushi, no CET marks. No CET, no JEE, nothing. You see, every university will specify your 12th marks. Ask for a 12th marks if you are looking for bachelor's, and ask for a bachelor's marks if you are looking for a master's program. If your marks are less, accordingly you will be suggested the university. Okay, it depends. There is no, basically they'll see only 12th marks, the boards. There is no such cutoff. Generally speaking, anybody who has more than 60 to 70% in 12th, they automatically become eligible. Some of the universities also accept less than 60%. So if you have a dream, you can definitely make it. Okay, let's do one thing. Since you are asking me so many questions and I am running out of time, simple question. Okay, I'm closing down the poll now. If you want to answer, just answer it quickly, please. Here you are. 56% want a call back. 44% they say we are not yet decided. So you will get a
just a message, and in case this 44% want to revert back, they can revert back, and 56% will definitely get a call. Okay, how did you find this session? Just one last question and we are closing. Okay, the most important thing for you today is to start dreaming about your own career. If you can do that one, I'm damn sure there are a lot of things that I can tell you on the webinar, but it gets elongated to a much bigger extent, and which is not something which we wish to do. So here you are. Thank you so much for such a good 77% of the students found it excellent. 15% of the students found it average and 8% of the low quality. I'm sorry for this 8%, but I think I have satisfied majority of the students. So I'm happy to get these marks. Fine, guys. So let's get connected and see finally, what can happen to your career. Okay? Thank you guys and see you sometime. Bye bye.